Assalamu alaikum and good afternoon, ladies and gentlemen. Pakistan Business Professional Council, welcome to this new era of banking in Pakistan for overseas Pakistanis. We start with the name of Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. This webinar is organized with Pakistan Business Council together with the support of our great embassy, Pakistan Embassy, where Imtiaz Saab is there, and in continuation of promoting awareness of Roshan digital account initiated by State Bank of Pakistan. To introduce the Pakistan Business Professional Council, just you should have the detail that this council was established in 2004 and we are completing nearly 16 years of time. This council worked under Abu Dhabi Chamber of Commerce. Like Pakistan Council, there are 30 ex-councils are here working and they're promoting trade, commerce and industries and everything. And it's a very good style of working there and they interact with the government closely on that account. As per constitution, the chairman of the council is the Pakistan ambassador in UAE, and we have for all this period nearly 8 ambassadors was the chairman, and all their contribution make this council very, very strong. It's in their leadership we work, and in their guidance we work. Also, we are very fortunate to have our patron since beginning, His Highness Sheikh Nahyan bin Mubarak. He is always there and always guide us how to us in all the areas, and he's always our speaker. I wish he's here now also, but today he has some program, otherwise he would have joined us on that account. He tried to participate in this council. He's a minister for tolerance, and he's a great personality in United Arab Emirates. I may say that the changing of the game is, he has done a lot of contribution to this. To moving to the council run by a powerful board and with all sector of business and professional persons. And that is the reason of our strength of the council. They are all participating here with us, and their presence, I welcome them. With that, I welcome Imtiaz Saab, who is the charge the affair, then our Deputy Governor Saab, Dr. Murtaza Syed. I welcome Mr. Shehzad Dada, President of CEO United Bank Limited, Mr. Muhammad Aurangzeb, President and CEO Habib Bank Limited, Mr. Yusuf Hussain, President and CEO Faysal Bank, Mr. Imran Maqbool, President and CEO MCB Bank Limited, Mr. Irfan Siddiqui, Founding President and CEO Meezan Bank Limited, and Mr. Shahid Sattar, President and CEO Samba Bank Limited. You all, we are very honored to receive you. We are very thankful to you for giving time and guiding our Pakistan community here in the United Arab Emirates and in the region. And I know my other colleague there in Doha, Qatar, and in Saudi Arabia, and in Bahrain, and in Kuwait. I give my salam to everyone because we did circulate it to all the embassies there and requested them to circulate, and to my friends over there. To start our program, I will guide to the participant that whatever the questions you have, you please place in the chat box. We'll try to answer this during that period, and we'll try to maximum answer that. If anything remaining, we'll send back to the State Bank of Pakistan or to the respective Bank of Pakistan, and trust me, I will attend each question and each answer. I can see Arshad Saab also, and I welcome Arshad Saab to the program. Thank you, Arshad Saab, for joining. With that, I will request our Charge Affair, Mr. Imtiaz Feroz Gundul Saab, to start the opening ceremony. Over to. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear panelists and participants. Dr. Kaisar Aziz Saab, thank you very much. आपने ये जो इनिशिएटिव है
रोशन डिजिटल अकाउंट को यूएई के अंदर मुतारिफ कराने का उसको स्टार्ट किया था. I'm especially grateful to State Bank of Pakistan or Dr. Murtaza Sayyid Saab that he has personally graced the occasion today. Arshad Bhatti Saab was also present last time, and all our dear and respected panelists are Muhammad Aurangzeb Saab, Shahid Sattar Saab, Yusuf Hussain Saab, Irfan Siddiqui Saab, Zia Ijaz Saab, Imran Maqbool Saab, and UBL CEO. At least these are the respected gentlemen जिनके नाम स्क्रीन पे आ रहे थे. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. ये रोशन डिजिटल अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की प्रायोरिटीज़ का एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है. प्राइम मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको फैसिलिटेट करने के ऊपर बहुत एम्फेसाइज करते हैं. इस सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये जो इनिशिएटिव है रोशन डिजिटल अकाउंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये पाकिस्तानी कम्युनिटी एक्सपैट पाकिस्तानी जहाँ पे भी हैं उनको पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करने के लिए और एक इफ़ेक्टिव वे में पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस सिलसिले में हम पहले 2 वेबिनार कर चुके हैं. आज इस सिलसिले की तीसरी कड़ी है. पहले दोनों जो वेबिनार्स थे वो पॉलिसी के ऊपर थे जिसमें हमारे जो ऑनरेबल पैनलिस्ट साहब थे अरशद भट्टी साहब वाज इन द फर्स्ट वन और सेकंड सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ था. तो उसमें पॉलिसी गाइडलाइंस को वाज़ा किया गया, बताया गया, लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया. आई होप हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं वो अब इसके प्रोसीजरल जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट कर सकेंगे, प्रोसीजर्स को पहले बता सकेंगे और देन जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हैंडल कर सकेंगे. वंस अगेन आई थैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मुर्तज़ा सैयद साहब कि आपने पाकिस्तान एम्बेसी यूएई के साथ और बाकी तमाम एम्बेसीज के साथ मिलके इस इनिशिएटिव को बाकी सब तक पाकिस्तानी कम्युनिटी में इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं. आई होप इंशाल्लाह आज का जो सेमिनार होगा बहुत यूज़फुल होगा पहले दोनों की तरह, और लोग जिन हमारे मोअज़्ज़ज़ पार्टिसिपेंट्स के जो क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेरीज थी जो पिछले दोनों सेमिनार्स के बाद आई और जो बाद में इन पर्सन लोगों ने हमसे की, दे विल गेट देयर आंसर्स टुडे. थैंक यू वेरी मच. Comes to Dr. Murtaza Sayyid, Deputy Governor, State Bank of Pakistan. MashaAllah, Murtaza Saab is the Deputy Governor and he has 20 years experience in macroeconomics research and policy making. He is an asset and he worked with the IMF for 16 years. And with all this experience, and State Bank of Pakistan is fortunate to have him. And of course, he is always there to explain about this initiative, and he will make an update to all of the participants here. I would like to welcome him here to the webinar for his speech. Thank you very much, Dr. Saab. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I'd like to really thank the Pak Business Professional Council in Abu Dhabi for hosting this event today, and also the Embassy of Pakistan and Imtiaz Saab in particular, whom we have been interacting with quite a lot in the last couple of months since we launched this Roshan Digital Account initiative. I would like to give you a little bit of an update on what has happened since the last time we spoke about a month ago. बड़ी अच्छी खबर है जी कि एक तो जो हमारे अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी पकड़ रहा है. Amounts are also coming in. They're coming in faster than before, as I think people are getting more used to the process of opening the account. Banks I think are becoming more better at handling the customer journey. तो मैं आपको थोड़े से पहले numbers बता दूं और उसके बाद I'd like to give you a sense of what we would like to see happening going forward. And then of course I'll hand it back to the presidents and the CEOs of the banks, participating banks that are also with us on this call today. उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ CEOs और presidents का. उन्होंने भी आज time निकाला इस webinar के लिए और मेरा ख्याल है इस तरह की interaction बड़ी useful रहती है with customers and the users.
सबसे पहले तो जी तकरीबन 2 महीने हो गए हैं जब से हमने रोशन डिजिटल अकाउंट इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, और आपको याद होगा आपके सुनने वालों को भी कि ये हमने इसलिए लॉन्च किया था कि वी वांटेड के ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो पाकिस्तान की बैंकिंग सिस्टम के साथ ज़्यादा आसानी से कनेक्ट हो जाएं, डिजिटली कनेक्ट हो जाएं, उनको पाकिस्तान ना आना पड़े, वहीं से उनके अकाउंट खुल जाए करे जहां वो होते हैं, और सारी बैंकिंग सर्विसेज जो पाकिस्तान में होती है वो उनको भी अवेलेबल हो जाए रिमोटली, डिजिटली, थ्रू देयर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। उसके बाद हमारा ये भी स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेशन थी कि हम इस अकाउंट के थ्रू उनके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और जिसे हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल बैंकिंग सर्विसेज, कि आप तरह तरह की चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकें, वो भी हम खोलना चाह रहे थे इस चैनल के थ्रू। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 महीने हो गए हैं तकरीबन जब से हमने लॉन्च किया है, और अभी तक तकरीबन 50,000 अकाउंट खुल चुके हैं सारे 8 बैंकों में जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हमारे पार्टनर बैंक्स हैं। तकरीबन 700 अकाउंट रोज खुल रहे हैं अक्रॉस द 8 बैंक्स। अभी तक we have got about a total of $100 million that have been sent through these accounts. और इनमें से $50 million जो हैं वो हमारे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 12 नवंबर को इसकी लॉन्च की थी, नया गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है जिसके बड़े अच्छे रिटर्न्स हैं, पाक रुपीज़ में भी हैं और US डॉलर्स में भी हैं। तकरीबन $50 मिलियन इन नए पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट हो चुके हैं जब से हमने ये लॉन्च किया। एक और खुशी की खबर ये भी है कि ये जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं इनके शरिया कंप्लायंट वर्जन्स भी अब अवेलेबल हैं। तो वो हमारे दोस्त जो शरिया कंप्लायंट तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं। बड़े अच्छे रिटर्न्स हैं इन पे, बिटवीन 5.5 and 7% डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग यू आर इन्वेस्टिंग फॉर। हमारे लिए हमने ये सहूलत भी पैदा की है कि आप छोटे अरसे के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 3 महीने के लिए कर सकते हैं, 5 साल तक कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान रुपी में इन्वेस्ट करें तो 9.5 से लेके 11% आपको मिल सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन द टेनर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ऑन एवरेज जी तकरीबन $2 मिलियन आ रहे हैं इन अकाउंट्स के अंदर, और हमारे ख्याल में दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट। मोमेंटम पिकअप हो रहा है जैसे जैसे लोगों को ज़्यादा पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का, और हम चाहेंगे कि आगे जाते हुए स्टॉक्स में और प्रॉपर्टी में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाए थ्रू दीज अकाउंट्स, क्योंकि जिस तरह आपको पता है हमने उसके लिए भी स्टेट बैंक ने सहूलत पैदा की है कि आप अपना पैसा जितनी आसानी से भेज रहे हैं उतनी आसानी से आप बाहर भी निकाल सकेंगे। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट आजकल बहुत अच्छा कर रही है, पिछले चंद महीनों में तो एशिया के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स में से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट भी है। तो जी ये है एक थोड़ा सा अपडेट के चीज़ें कैसे जा रही हैं। आगे जाके जी हम चाह रहे हैं कि ये नंबर्स और भी बढ़ें और लोगों के इसके बारे में पता चले। इस तरह की वेबिनार्स जिस तरह हम आज कर रहे हैं ये बड़े यूज़फुल हैं, हम और डायस्पोरा के साथ भी कर रहे हैं और एम्बेसीज के साथ भी कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि अगर आपके जो मेंबर्स हैं उनको ये पसंद आए रोशन डिजिटल अकाउंट, आप भी हमारी मदद करें, आप भी अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज को इसके बारे में बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। एक और आई थिंक जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गोइंग फॉरवर्ड वो ये है कि हमने अपनी तरफ से काफ़ी जो इसके शुरू में लोगों की फीडबैक थी कि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में क्या उनको थोड़े से मसले आ रहे थे। जब भी आप कोई नया काम करते हैं, ख़ासतौर पे इस तरह का बड़ा नया काम, उसमें शुरू में थोड़े से टीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बैंकों के साथ मिलके हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे प्रॉब्लम्स एड्रेस हों। तो आगे जाके अगर कोई और इश्यूज आते हैं तो प्लीज़ आप बैंक्स को बताएं, हमें बताएं, एंड वी आर कमिटेड, जैसा कैसे साहब कह रहे थे, टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस टू मेक श्योर कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो। Lastly, before I hand it back to Kaisar साहब, I would just like to say कि मेरे ख्याल में जिस तरह हम कह रहे हैं कि ये एक नया एरा है पाकिस्तान की डिजिटल बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भी एक इज गोइंग थ्रू अ फेज राइट नाउ जो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। पहली दफ़ा हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर हैं जो बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ उनके कॉन्टैक्ट भी है और उन्होंने कहा भी है कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े एसेट हैं। तो आई थिंक के और आपके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री में, स्टेट बैंक में प्रोफेशनल लीडरशिप आ गई है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझती है, स्टेबिलिटी में बिलीव करती है, और साथ साथ हमारी ग्रोथ स्टोरी भी बड़ी अच्छी है। आई थिंक सीपेक के साथ ये जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर काफ़ी अच्छा पैकेज दिया है गवर्नमेंट ने,
तो मीडियम टर्म पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो आई थिंक हर मुल्क जो है वो एक टेक ऑफ फेज के थ्रू गुजरता है, और खुदा करे कि पाकिस्तान के लिए भी ये एक टेक ऑफ फेज साबित हो। माजी में अगर हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, काफ़ी लोग बात करते हैं कि अकाउंट्स पहले फ्रीज हो गए थे लेट 90s में, उनको मेरा ख्याल है कि अब हमें वी शुड नॉट बी हॉन्टेड बाय दैट एक्सपीरियंस। अब एक डिफरेंट किस्म की लीडरशिप है, डिफरेंट किस्म की ओरिएंटेशन है, जो समझती है कि बाहर के लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम और भी चैनल्स खोलेंगे। हम चाह रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को और भी फैसिलिटेट किया जाए। तो सिर्फ मेरा आखिरी मैसेज ये होगा कि जो पास्ट में गलतियां अगर हुई हैं गवर्नमेंट से, उनको अब आप डोंट लेट दैट स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान। इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, बड़ा रोशन है, और हम चाहेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ इसमें खुल के हमारे साथ इस जर्नी पे चलें। कैसे साहब, इसके साथ मैं अपने रिमार्क्स एंड करता हूँ जी। वो बैक टू यू जी। Thank you so much, Dr. Saab. Thank you for your update, and we are very happy to know that the quantum you defined about 700 accounts per month is coming, and the terms you explained, it's really best return yet to see in the market, that return. I'm sitting in United Arab Emirates. I know nobody can get that return for their deposit, and I'm sure this is a good journey where you will see different banking in Pakistan. I'm sure Overseas Pakistani will certainly, like you have 700 accounts, you will have more, because the more they see, the more they have confidence, the more will start opening the account. And I appreciate all our 8 banks. They are really doing good work, and certainly if they will process fast, it will be a good name in the market, and people will rush to open the bank account. As I always say, that to maintain a bank account in Pakistan is not easy by Overseas Pakistani, because it turns to be dormant, always become dormant, and it's very difficult for a person to go to the bank, sit with the banker, and get the account revived. This is a constant problem, and the main question which is coming from the Overseas Pakistani, can they have those balances appearing in the bank account transferred to the digital, this Roshan digital account? That you can answer later. But now I welcome, mashallah, Shehzad Dada Sahab is President. Dr. Arshad Bhatti Sahab, you want to speak something? You want to give any update? I think, thank you, Dr. Saab. I think the honorable presidents are there, and they would it would be appropriate that they provide their views. If there are any questions, then I am here. Okay, thank you so much. Because I saw, with high respect and honor, I have to ask you, you are the banker's bank, and I have to take care of that. So Shehzad Dada Sahab, again, back to you, President, CEO, and member of the Board of Directors of United Bank Limited. Mashallah, very enterprising. If you see the career, he has all the international bank behind him, and all the experience he brought to United Bank Limited, the famous bank of ours of Pakistan, leading here in United Arab Emirates also. It has a history, and we can write the history on that. And he's a mashallah sportsman. He plays golf, which is great, and you can see him a smart person. So over to Shehzad Dada Sahab. So, Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Kaisar, and thank you, Imtiaz Saab, for arranging this. Also, a very good afternoon to Deputy Governor Saab, Murtaza Saab, and Arshad Bhatti Saab. And it's really an honor and a pleasure to be here along with my colleagues from the banking fraternity. And as Dr. Murtaza was saying, this Roshan Digital account is a key initiative of the government of Pakistan under the leadership of State Bank. And I think it's really a demonstration of true leadership in trying to get something through which had taken years to put together. But I think now that it's come together through an amazing level of collaboration and cooperation between the banks also, I think it has a very bright future. It's in early days, but I think the way it's been set up and the approach that has been taken by the regulator and by the banks, it's very, very customer focused and customer centric. Effectively, from any part of the world, you can open an account a digital account in Pakistan, and you will have ample opportunities to invest that money either in fixed income or in equity markets or real estate or any other channels that perhaps would be of interest to you. Furthermore, through this account, you can also take care
of your needs in Pakistan, or your elders or your loved ones, by making bill payments, by paying utility bills, school bills, and the work. So I think it's really something that's very much also at the heart of what the government of Pakistan is trying to do, which is e-governance and get digitization across all platforms. So as a bank, I'm delighted. And again, the collaboration that we all as banks were able to put together, and you'll hear from my colleagues in a minute. I won't take up too much time. From a UBL's experience, what we found initial days were we had teething problems like every other bank would have had, but Alhamdulillah, we have come out of that quite well. We're leading the pack for now, but I only say that for now because competition is fierce, because there's a lot of interest, and inshallah, we'll see the pie growing. So far, we have opened 12,500 accounts. We have had over 25,000 leads. And we have seen a very good amount of interest in investments in Naya Pakistan certificates. We've also opened up this account to DHA, CDC, and as Dr. Murtaza Saab was saying, it's also Sharia compliant investment opportunities. So it's a multi-purpose. I think for us, UAE plays a very important role. We have been there, as Dr. Kaisar, you mentioned, for a very long time. We have 7 branches. You can access these accounts digitally, but also through our branches. We have fully trained staff who can assist our investors and customers and would encourage them to do it. These accounts can be opened up in multi-currencies, PKR, USD, GBP, Euro, SARS, Saudi Arabian Riyal, or dirhams. These accounts are fully retrievable. People have tried and tested that also. We saw in early days people coming in, putting some money and taking it out to just check that what is being said is really true. The RDA can also be used to invest in Naya Pakistan certificates, which are offering very handsome returns. And as Dr. Kaisar, you addressed that these returns are far greater than what you can get in the market. The ease of doing it, there's no filing for tax returns. So these are some salient features that these accounts offer. And we are really hopeful that through these accounts, we can attract and reconnect with the expat Pakistan community. Myself being an expat for over 20 years can really, empathize, it can really relate to this product, because I remember when I was there and I wanted to make some payments or send money to my loved ones, or even do some charity work, it became a real problematic how to do it and the time it took. Now with the touch of a button, you can literally send money to whoever you want, including anybody that is not within your nucleus of family members. Again, the speed in it which happens. My last parting words would be, seeing is believing in this product. Please open up an account, whether you do it at UBL or you do it at any other bank. All these banks offer great services, but please do open the account and experience it yourself, because once you experience it, you will see how easy and how user-friendly it is. And it will give you an avenue to also get very good returns for your investments, which I think, and again, I'm saying this with some experience, having an international platform and experience, these returns are amazingly good returns in the marketplace currently, given the risk profile. So with that, back to you, Dr. Kaisar, and once again, thank you for having UBL on this platform. Thank you so much, Shahzad. Thank you. I again vouch that UBL is playing a great role in United Arab Emirates. As you said, they have 7 branches. We opened 12,500 accounts. You have Sharia compliant, and you are most open here for everyone. It is like that. And I must say that Mr. Zishan is taking care of good interaction we have. And my best wishes to you and all progress to it. And I'm sure, as you said, all the 8 banks have same capabilities, and it's a big opportunity for Overseas Pakistani to have these facilities available in the banking area and their needs. Now we invite the famous Habib Bank Limited, which we see from the childhood, Mr. Mohammad Aurangzeb Saab, President CEO HBL. His responsibility, he was, mashallah, from JP Morgan, which is a great bank. You all know ABN AMRO, another famous bank, RBS, another famous bank from Singapore. He is, mashallah, he has all his exposure.
He's a global CEO council organized by WSJ Dow Jones Group. He's also the chairman of the Pakistan Bank Association, director of Pakistan Business Council, and council member at the Institute of Bankers Pakistan. MashaAllah, Aurangzeb Saab, you have a great experience, and I think Habib Bank is lucky to have you and all the experience going there, and it's ultimately going to Pakistan economy. Welcome, Mohammad Aurangzeb Saab. Dr. Kaisar Saab, बहुत शुक्रिया for this kind invitation. Imtiaz Godal Saab, thank you again for organizing this. जैसे Deputy Governor Saab ने पहले जिक्र किया कि we are now gone way beyond proof of concept, right? Thousands of accounts have been opened, और जो investment है और remittance की जो scale है, and more importantly, the speed with which things are now happening, alhamdulillah, it's all looking very good. और इसकी reason बड़ी simple है. I won't go into the details because मेरे बाकी peers ने भी आकर बात करनी है. You know, already शहजाद ने बहुत comprehensively cover कर ली हैं सारी चीजें, जो इसमें coverage है, जो account में flexibility है, जो lifestyle banking के points हैं, और जो interest differential है, all leading to, quite frankly, a win-win situation. So उसी की वजह से ये जो accounts में जो तेजी आई है opening में, and we have seen it in our own bank. And admittedly, जैसे शहजाद ने भी कहा, शुरू में कुछ teething issues थे in terms of how we make this process end-to-end digital. That those are behind us. लेकिन अभी भी देखिए ये on and off हमें complaints आती हैं. मकसद आज ये प्रेसिडेंट्स और सीईओस का इस कॉल पर होने का दो तीन चीज़ें हैं, और इसमें से मेन मकसद ये है कि आप सबको ये अश्योरेंस दी जा सके कि दिस हैज़ अटेंशन राइट एट द टॉप. आप देख रहे हैं डिप्टी गवर्नर साहब हैं, अरशद भट्टी साहब हैं, गवर्नर साहब हमारे साथ बड़ी डिटेल में बात करते हैं. पिछले हफ्ते आई हैड लंच विद जुल्फी बुखारी साहब हु इज़ इन यूएई क्वाइट ऑफ्टन. So this is very high on his agenda in terms of ease of doing business for overseas Pakistanis. तो इस वजह से ये will always remain at the top of our attention span, because ये जो स्टेट बैंक का initiative है, ये मुल्क की इस जो not only from a digital transformation perspective, but सारी जो investment profile है उसको इंशाल्लाह चेंज करने में this is a big change. और जैसे शहजाद ने खुद भी कहा कि देखें हम में से भी जो लोग मुल्क से बाहर रह चुके हैं, मैं 2018 में वापस आया after spending about 18-19 years in Europe and in Asia, and we can relate to some of the issues जो अभी भी कुछ जो complaints आती हैं. So इसलिए हमारा, चूँकि हम खुद as a client experience कर चुके हैं, तो जब हम as a banking organization देखते हैं, हमारे लिए relate करना भी आसान है, और उसी लिए जो the speed with which we actually fix these issues is also very critical. और डॉक्टर केस साहब, आप वलीद कुवा साहब को जानते हैं जो हमारे जनरल मैनेजर हैं in Dubai. We have gone, जैसे शहजाद ने भी कहा, हमने जाकर जो यूएई का सेंट्रल बैंक है उनसे हमने एक्सप्लिसिट अप्रूवल ली ताकि बाद में कोई मसले मसाइल ना हो, टू ऑफर असिस्टेंस थ्रू आर, जो हमारी वहाँ जो 6 ब्रांचेस हैं उनके थ्रू भी हम जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं. सो वी took special permission, and they are very grateful to the UAE Central Bank as well कि उन्होंने हमें ये परमिशन दी कि ताकि ऑन ग्राउंड भी हम वैसे तो ये सारा प्रोसेस एंड टू एंड डिजिटल ही होना चाहिए, लेकिन ऑन ग्राउंड भी हमारी ब्रांचेस हाजिर हैं. और from all our perspectives, we are very committed inshallah to make it a success and make it as easy as we can for the general community in Gulf and certainly in UAE. So with that, Dr. Kaisar, I'll give the mic back to you. Thank you so much. I really thank you for Habib Bank को introduction की मोहताज नहीं है. Habib UAE में बहुत मशहूर बैंक है, ये हर जगह इसकी माशाल्लाह ब्रांचेज हैं और अच्छी खिदमत करी सबकी, especially Pakistan community की. This is true. I had a talk with Mr. Walid. He's a great person. I have a good interaction with Mr. Walid and Mr. Mashkoor, and they are doing
good work here. I work for that. MashaAllah, this is and Habib Bank, as I always say, is an asset here in United Arab Emirates. All Pakistani see as a hope as is our bank. Same as like UBL, they say is our bank. And they go proudly inside to that bank to bank for it. And my request खाली ये है कि आप अपने management से कहें कि they go with a great hope in your bank. They do not go to other bank on that. So they should take care of special care on that. I'm sure you must be doing, but little more attention to the Pakistani. It will be give confidence. And those people are, which is a small level, they always go to the bank. They don't want to believe in anything. They go personally there. So please look into it. That and they will is an asset for Pakistan, who is contributing quite some to Pakistan in remitting. With that, thank you very much, Janab, for this. And then I will invite Mr. Yusuf Hussain, President and CEO of Faysal Bank. MashaAllah, he has 25 years diverse professional experience. His previous assignment primarily from ABN AMRO Bank, where he held multiple senior positions. MashaAllah, he is from Mashriq Bank, UAE. So he is also from United Arab Emirates. He has experience. MashaAllah, you all are been overseas Pakistanis at some time. So you, as you said, you understand everything. With that, I welcome Mr. Yusuf Hussain Saab, President and CEO of Faysal Bank Limited. Can you hear me, sir? Yes, we can hear. So thank you very much. I'd like to thank you, sir, and the Pakistan Embassy and the Deputy Governor as well. I think this is a great initiative which has been led by the State Bank, is continuously being followed up by the State Bank. So it's really a national initiative. I mean, I think it's inclusiveness of NRPs has been a very important initiative of this government, and their ability to contribute to our economy. And it's really a win-win situation through this Roshan digital account, whereby value is being delivered to them, not only in terms of operational convenience and ease, but also in terms of value on their investments as well. So the multiple opportunities that the central bank has sort of led in terms of the 8 banks offering those include the stock market, include real estate, and if we talk about the real estate, on the other side, housing is really an initiative that the central bank has picked up, and the banks are due to invest in these housing schemes. So I think there is going to be a great opportunity for Pakistanis to put in their money in housing schemes. DHA arrangements have already been done. State Bank has facilitated in terms of other housing schemes as well. So the returns on Naya Pakistan scheme are phenomenal, as it was already mentioned. I think this is really a one-off sort of opportunity in many areas where our NRPs can actually secure their future in terms of housing and in terms of investments as well. Just I wanted to tell you a little bit about Faysal Bank. So Faysal Bank used to be a conventional bank, and it is converting into 100% Islamic bank. It has been rated, it has been given the highest rating by the international Islamic international rating agencies in Pakistan. It is offering Sharia compliant solutions, and we have dedicated teams in terms of our relationship managers who are committed to the cause, not only in terms of this opportunity being a national cause, but we see this opportunity to be actually another segment of customers which have opened up in terms of the local banks, and we want to service them in the best possible way.
We have stepped a little ahead in terms of some of the promotional schemes whereby we have done a tie-up with Zameen.com, which is advising, giving free advisory to our customers, and we have also arranged for some other promotional schemes to encourage this inflow of foreign currency in Pakistan. So as an institution, we absolutely stand fully committed, and this is something which is actually more than just an institution. It is actually a national cause. So that is all from my side, sir. Thank you very much. We can't hear you, sir. Kaisar Saab. You're on mute, sir. Sorry. You can hear me now? GG. Yeah, okay. Yusuf Saab, thank you so much for your statement and the detail and explaining everything. Faysal Bank is a great presence in Pakistan, doing great work. And Zameen.com, yes, is again, Imran Khan Saab has done a great game changer in bringing in the construction industries where they say, I think if I'm right, 5 million units he wants to construct of, and that will give a good impact for 32 industries there. Overseas Pakistani looking for on that account also and want to invest on that area. And Pakistan Business Professional Council would like to do some interaction in this respect and guide the Overseas Pakistani on that subject, because they are very keen to invest in infrastructure or any other thing where this opportunity comes up. We will interact with the government of Pakistan, Zulfi Bukhari Saab or other related person on the subject. And this is a good time because the bank accounts are there with you, and then they can always have confidence to invest in the real estate of Pakistan, which is again good for economy. Thank you, Yusuf Saab, for everything. Now I want to invite Mr. Imran Mahmood, CEO of Muslim Commercial Bank Limited. Mr. Imran serves as President and Chief Executive Officer of MCB Limited. He is a seasoned professional with over 3 decades of diverse international banking experience. Prior to the current role, he was the head commercial banking group, where he successfully managed the largest group of the bank in terms of market diversity, size of the workforce, number of branches on a countrywide basis, and diversified spectrum product. His earlier multi-phase group head assignment include wholesale banking group, and he has a directorship in Adamji Insurance, the famous company, MCB Financial Service Limited, MCB Employee Foundation, Adamji Life Insurance. Marshall MCB is a famous bank again. It has a history. It's a great bank, and I'm sure he's providing great service to the overseas Pakistani. Welcome, Imran Mahmood Saab. Shukriya ji. Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Kaisar Sahib. And I'm also grateful for Mr. Imtiaz Saab, from SPP, Dr. Murtaza Saab and Arshad Bhatti Saab, for arranging this platform to share the benefits of Roshan Digital Account. मैं सिर्फ यही अर्ज करूँगा जी, क्योंकि मेरे से पहले मेरे कॉलीग्स ने बैंकिंग सेक्टर से काफ़ी तफसील से उन्होंने इस बारे में जिक्र किया है. I will take it from where Dr. Murtaza Saab mentioned that overseas community, लगभग कोई 9 मिलियन के करीब पाकिस्तानीज overseas में हैं. And ये जो एक initiative है, this is of course a long-term plan where digital and remote onboarding of non-resident Pakistanis is taking place. जैसे मेरे colleagues ने बताया, 8 banks, they got together, state bank की guidance, and इसमें teething problems भी आए because digitization एक phase है जिसमें learning experiences भी आते हैं, and customer की feedback भी आता है जिसमें call centers बड़े active role play कर रहे हैं customers को reach करने के लिए,
कस्टमर्स का फीडबैक भी आता है और उसकी बुनियाद पे we keep on improving our services to a level जहाँ वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो उनका एक्सपीरियंस एक इंटरनेशनल कंट्री में रहते हुए उनका वहाँ के बैंकिंग सेक्टर से होता है इंशाल्लाह as we go forward this will be our objective collectively as an industry and this is the guiding principle given by State Bank of Pakistan as well. जैसे मेरे सारे कॉलीग्स ने कहा है जी वी आर ऑल वेरी होपफुल द नंबर्स आर इंक्रीजिंग 2 माह में जहाँ से हम शुरू किए थे और जैसे आज डॉक्टर मुर्तज़ा साहब ने कहा है नाउ इट इज़ रीच 700 अकाउंट्स पर डे एंड लगभग कोई $2 million प्लस पर डे पाकिस्तान में आ रहे हैं एंड इट्स अ 2-way process. That is the key factor. It's a 2-way process. The funds come in, people are using it for their lifestyle banking choices, whether it's to meet their personal needs of bill payments, of transfer of funds, or whether it's investments in a bond market or it's investment in real estate. And then the good experience, which is first time in the history of Pakistani banking, is that at their own wish and at their own discretion, they can take the money back to their parent account wherever they are maintaining it. And the returns are very attractive. So, इसमें banking industry को भी एक नया level of existence पे जा रही है because of the digitization applications. And it is also serving the national cause. तो मेरी सिर्फ दरख्वास्त होगी obviously our pride of Pakistan, which is the international community, the overseas Pakistanis, that this is now a platform established for you to have remote control of your accounts, for you to have a digital experience of the services offered by the banking sector, and for you to have the options to utilize the digital platform of various 8 banks to invest, use for your personal needs, and then enjoy the banking without being into Pakistan. So that is the critical, that it's like you are home away from home. It's the same concept that is coming here, that you are remotely managing your accounts in Pakistan and with full discretion of taking the funds anytime when you want to take it back to your own country. So with this, I'll keep it short. MCB, जैसे आपने कह दिया, I don't need to share the details because our objective is to promote Roshan digital account. We also have a presence in UAE, a small setup, but our objective is to highlight the Roshan digital account to make it a success, and not only for a short term, not for the medium term, but it will be a continuous product for generations to come, for decades to come. Shukriya ji. It's the part that we also from the Great City Bank and Bank of America, जो एक तरह के स्कूल है बैंकिंग का, और कितने जो हमारे बैंकर सारे वहीं से बहुत से आते हैं. Yes, you have the representative office. We have interacted. It's in Dubai, and that I always request other banks who do not have the office in UAE, and I suggest them to go to Abu Dhabi Global Market or DIFC. Just have a representative office there. So it's a difference. It will make a little difference. That's my suggestion. Very important point. Imran Makul Saab said that the money can come back. Everyone has a concern that when I deposit the money in dollar or rupee, whether it will come back or not. And it is right. And this is the reason of success, that even if you invest there in stock market, and if you have return from the stock market, still that money also can come back to you. So that is a good point and the reason of success of this initiative. Thank you so much, Imran Saab. Now I would like
to invite Mr. Irfan Siddiqui Saab. I know him long before. He's from my same profession. I am from A. Ferguson and Company, Karachi. For many years I was there. I had that profession. He's also from same profession. I'm very happy to see that. And there's a difference when the banking and our profession mix is very different color. And mashallah, Irfan Siddiqui Saab is famous, especially as for the Meezan Bank is in relation to Sharia compliant things. It's right from the beginning. I know he has a lot of funds. I used to come to his bank that time when I was in to visit Karachi. So to start with him, he is the chief executive of Meezan Bank. He is also a member of Information Technology Committee and of IFRS 9 implementation oversight committee of the board. Article with Cooper Libran is another top company now. Mr. Irfan Siddiqui Saab qualified as chartered accountant from the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. He has been several senior management positions, including Chief Executive Officer at Al Meezan Investment Bank Limited, General Manager in Pakistan Kuwait Investment Company, advisor to Managing Director at Kuwait Investment Authority. So he has all the exposure. Over to Mr. Irfan Siddiqui Saab. Thank you so much, Kaisar Saab. Coincidentally, I also spent 7 years in your city, Abu Dhabi. I was with the Abu Dhabi Investment Authority. So there's some fond memories of Abu Dhabi as well. So, shukriya bahut introduction ka. Or, mashallah, starting from Shazad and Aurangzeb and everybody, mashallah, ye product coverage to aap logon ko bahut mil gayi hai. Very briefly, I'll explain to you what Meezan Bank is. Meezan is a fully dedicated Islamic bank in Pakistan. हमें license मिला था 2002 में 18 साल पहले. And mashallah, we now have 800 branches across Pakistan. और अभी इसी forum पे question raise हुआ था on the chat box कि हम अबू धाबी में या UAE में कब branch खोल रहे हैं. तो obviously unfortunately इसका answer मेरा फिलहाल ये है कि हमारा फिलहाल पाकिस्तान से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है. इसलिए with this digital world, especially with COVID, lessons we've learned from COVID, you know, everything is now digitalized. आप जो भी काम करना चाहते हैं वो जाते हैं. And as it is even before Russian digital account, we had huge numbers of expatriate Pakistanis, especially from UAE, who are account holders at Meezan Bank, और वो हमारी मुख्तलिफ services avail कर रहे हैं. I think Russian Pakistan gave like an accelerator or a boost to that relationship that we had with the community outside Pakistan. और माशाल्लाह अब हमारे पास 8,000 Russian digital accounts खुल चुके हैं. And I think from, if I am right, तो 70 मुख्तलिफ countries के accounts खुले हैं ये. तो what I would really encourage कि हम 8 banks हैं, किसी की expertise किसी country में ज़्यादा है, किसी की कम है, whatever, but across, if you see the world, I think between these 8 banks, we are very well equipped to handle anything. Especially now it's all digital. तो experience भी हमारे जो customers हैं, सारे customers, whether it's Bank A or Bank B, सबका पहले छोटे मोटे teething problems आए थे, but जैसा Deputy Governor साहब ने कहा कि वो teething problems भी अब overcome कर गए और माशाल्लाह बहुत smooth तरीके से चीजें हो रही हैं. So we really look forward to serve our expatriate community, especially from a Meezan perspective, in a Sharia compliant manner. ये जो Islamic certificates हैं जो float भी हैं, we worked very closely with the State Bank and Ministry of Finance to bring that product here. और again एक question ये आया था अभी chat box पे कि उनकी अगर खुदा ना खास्ता लॉस हो तो क्या होगा. तो आपको I think ये ख्याल रहना चाहिए कि चाहे वो conventional instrument है हमारा गवर्नमेंट पाकिस्तान का या Sharia compliant है, they are both sovereign instruments, they are both guaranteed by government of Pakistan. तो इसमें तफसीलात में तो हम चैट बॉक्स के थ्रू आंसर कर देंगे कि किस तरह मदारवा बेस्ड स्ट्रक्चर होता है ये. बट इंशाल्लाह लॉस के चांसेस इसमें नेग्लिजिबल है, इनफैक्ट नहीं होने के बराबर है. तो आप इत्मीनान से ये पैसे इन्वेस्ट करें इनटू wherever you feel more comfortable in Sharia compliant mode and get that return of 5.5% to 7% depending on the tenor which you're using. और उन सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट आप these certificates are collaterable as well. तो अगर आप कभी कोई ये सर्टिफिकेट लेते हैं, आपको कर्जा लेने की जरूरत पड़ती है, घर लेने के लिए पड़ती है, तो you can always use these certificates to do a collateral.
तो आप उसमें 5, 5.5, 6, 7% भी कमा रहे होंगे, साथ में रख के आप जहाँ कर्जा ले सकते हैं. You know, if your parents want to buy a house or if your other family members want to buy a house in Pakistan, you can always collateralize that and leverage that as well. तो इसके अपॉर्चुनिटीज तो अनलिमिटेड है. और इसमें मैं पहले भी हमेशा ये कहता हूँ कि इसका जो मेन चार्म है रोशन डिजिटल अकाउंट का, इज टू कनेक्ट आवर ओवरसीज कम्युनिटी विद पाकिस्तान. The numbers which the deputy governor gave, mashallah, they are good numbers के $100 million इस अकाउंट के थ्रू आए थे, लेकिन $100 million is neither here nor there for Pakistan. I think what we are looking as Pakistan is a long term sustainability के अभी आप लोग सब बैठ के स्विट्जरलैंड भी देखते हैं और जर्मनी भी देखते हैं और सिंगापुर भी देखते हैं for your investment needs. So Pakistan should be in that menu where you are using your surplus savings in order to invest on merit, not invest because it's your home town, home country or whatever. तो ये सिर्फ कंट्री बेस्ड नहीं होना चाहिए कि भाई हमारी कंट्री हम इन्वेस्ट करें. I think it's a very good opportunity to invest for your own reasons. कि पाकिस्तान has got a good opportunity. DG साहब ने भी बताया था कि हमारी स्टॉक मार्केट is probably the best performing market in the Asian in this COVID times. तो you know where कुछ चीजें पाकिस्तान में मसले मसाइल भी हैं, लेकिन कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह. Rate of returns are good. Even during the COVID environment, स्टॉक मार्केट जो परफॉर्म कर रही है उसकी प्राइमरीली वजह ये कि जो कंपनीज लिस्टेड है हमारी, they are all performing very good. Banks are doing well, textile is doing well. We were very worried कि यार वो exports का क्या होगा. माशाल्लाह they are working to full capacity. तो पाकिस्तान पे फेथ रखें, especially you know अगर हमारे ब्लड में पाकिस्तान है तो सबसे आसान ही होता है कि you know rather than going to places which we will never go and see, to invest in an area जहाँ हमारे roots भी हैं. So I think I'm sure there are other people who've got other points as well, but I assure you कि हम जहाँ भी हों 8 banks के ambit में, you'll get the best service which you will get anywhere in the world to look after your investment, and the repatriability is 100% assured. तो उस दिमाग की ईज के साथ रखें कि आप पैसे ला भी सकते हैं और निकाल के ले जा भी सकते हैं. तो थैंक यू सो मच. Irfan Saab, thank you so much for your statement. I think you identified many important things, especially the Naya Pakistan certificate can be collateral and they can be used for buying property or any assets there. And in that way, it's a dual edge, we can say that they gain earning also and appreciation in capital asset also. और also आपने अच्छी बात की, पाकिस्तान के stock exchange is flourishing in spite of these challenges, and it is in the world as a ranking stock exchange, and I commend the management and SCCP and all the organization and State Bank of Pakistan for looking all these things. We on the financial part, we are doing a great work, and I'm sure this is the Russian digital account will add more to this and will be having more progress, inshallah. Sure. Thank you so much, Irfan Saab. You're doing a great job, especially in the Sharia compliant area. I would like to welcome Mr. Shahid Sattar, President CEO Samba Bank Limited. I know the Samba Bank from Saudi Arabia. I visited that bank that time, many years. Shahid Sattar Saab is a seasoned banker, well known in Pakistan as corporate world. 40 years of local and international banking, mashallah. He holds the position of President and CEO and Executive Director at Samba Bank Limited since 2013, while he's also on the board of InstaPlus Private Limited. In the past, he has held directorship of MNet Services, Bank Al Bilad Investment, Company Saudi Arabia, Pikik Insurance, Pikik Asset Management. Welcome, Shahid Sattar Saab. Thank you very much, Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Dr. Kaisar Saab, Imtiaz Gondal Saab, Dr. Murtaza Saab, Arshad Bhatti Saab, and my other colleagues from other banks presidents. I think most of it has already been said on this account. लेकिन मैं इसमें कुछ चीजें बात करना चाहूँगा जो फॉर एग्जांपल शुरू में आपने बात की डॉर्मेंट अकाउंट की. तो पहले ये होता था जी कि एनआरपीज ओनली पाकिस्तान में आते थे, वहाँ पर अकाउंट खोलते थे, जाहिर है जब वो वापस चले जाते थे वो अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता था. अब वो चीज़ नहीं रही है. नाउ दे हैव एक्टिव अकाउंट, बल्कि
आई थिंक स्टेट बैंक भी और बाकी बैंक भी ये बार बार ये बात कह रहे हैं कि व्हाट वी आर ओपनिंग एन अकाउंट इज रियली फॉर लाइफस्टाइल बैंकिंग. We want that people should actively use this account not only for their investments but for their normal working needs where they can make the bill payment, अपनी और भी कोई जिस तरह की चीजें, कोई गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है. और आई थिंक सारे बैंकों ने DHA के साथ, ज़मीन.com के साथ और CDC के साथ फॉर स्टॉक मार्केट, सो हर तरह की अपॉर्चुनिटीज ये प्रोवाइड की जा सकती हैं हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज को, जो बाहर बैठ के इसको बिल्कुल नॉर्मल अकाउंट की तरह ऑपरेट कर सकते हैं. और ये डॉर्मेंसी वाला मसला अब ये नहीं रहा. दूसरी बात ये है कि सर, जैसे आई एम श्योर बाकी बैंकों में भी ये होगा, लेकिन मैं अपने बैंक का ये बता दूं कि हमने ये ऑब्वियसली हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, हमारी लिमिटेड ब्रांचेस हैं, बट कस्टमर को ये चॉइस है कि वो सिलेक्ट करे कि किस ब्रांच में उसने अकाउंट खोलना है, डिपेंडिंग ऑन विच एरिया ही बिलोंग्स टू. और उसके बाद जैसे ही वो उसका अकाउंट खुलता है तो हम डेडिकेटेड RMs जो है वो उनको अलॉट करते हैं, एंड वो RMs फिर उनके साथ आगे इन टच रहेंगे फॉर देयर फ्यूचर नीड्स, फॉर देयर एनी कंप्लेंट्स, फॉर व्हाटएवर दे वांट टू डू. सो इस तरीके से हम अपने NRPs के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं. जैसे पहले मेरे कोलीग्स ने भी कहा कि ये अकाउंट जो है ये कोई 1-2 महीने या साल 2 साल का अकाउंट नहीं है, दिस इज अ लाइफ टाइम अकाउंट. एंड आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए भी दिस इज अ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन. आई थिंक फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये अपॉर्चुनिटी दी गई है, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है फॉर द इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान एंड फॉर द NRPs ऑल्सो. और जो बैंक्स हैं उनके लिए भी ये एक बड़ी अच्छी सिचुएशन है जिसमें वो अपने नए कस्टमर्स को वेलकम कर सकते हैं और उनके साथ ना सिर्फ अकाउंट खोल सकते हैं बल्कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं. और इसी तरह मैं ये भी बताता चलूं कि इसमें ऑल मेजर करेंसीज में अकाउंट खोला जा सकता है और उसमें ट्रांजैक्शन की जा सकती है. हम उसमें आपको ATMs कार्ड भी देंगे, आपको जो भी और फैसिलिटीज होंगी वो सारी प्रोवाइड कर सकते हैं. सो आई थिंक जनरली हमारे पास और जैसे बाकी बैंकों में डिप्टी गवर्नर साहब ने बताया बहुत अच्छा उसके ऊपर हमें रिस्पांस आ रहा है, एंड दिस रिस्पांस इज एक्चुअली इंक्रीजिंग बाय द डे. सो वी आर वेरी हैप्पी. हम लोग सऊदी अरब में भी कुछ वेबिनार अरेंज करवा रहे हैं. हमारे पास भी कोई मोर देन 50 कंट्रीज से NRPs ने अकाउंट खोले हैं, विच वी आर वेरी वेरी हैप्पी. और डिजिटल की दुनिया और डिजिटलाइजेशन की वजह से दुनिया बहुत छोटी होगी. It doesn't matter whether you are sitting in UAE or UK or America or New Zealand or Australia, लेकिन आप वहाँ से बैठ के with the click of a button you can open an account in Pakistan and you can operate it like a normal account. So I think this is a great initiative और हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे लोगों की awareness बढ़ेगी इसमें further भी funds आएंगे. I think alhamdulillah मैं सांबा के point of view से आपको बता सकता हूँ कि we are one of the major recipient of the Naya Pakistan certificates, जिसमें लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास फंड्स जमा कराए हैं और डेली हम अकाउंट्स खोल रहे हैं और डेली इसमें बतदरीज इसमें जो है ना इजाफा होता जा रहा है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर अरेंजिंग दिस. आई थिंक दीज वेबिनार्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी अवेयरनेस और इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी यूजफुलनेस का अंदाज़ा होगा, उसी लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा. उसमें NRPs का भी इसमें आसानी हो जाएगी और I think it's a good national cause also. Thank you very much once again for your kind words and for giving this opportunity. Thank you very much. शाहिद सत्तार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया सारी एक्टिविटी संबा बैंक की. माशाल्लाह, मैं आप बहुत बहुत मुबारक हो आपको द वे यू आर हैंडलिंग दिस. Samba Bank giving good impact in the market and in all areas. आपने सही बताया कि these are an asset. जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे रिपीट किया, डॉक्टर साहब ने कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा ओवरसीज इज एन एसेट टू पाकिस्तान एंड रियली वी डोंट अभी आपके वन ऑफ द प्रेजेंट्स यू मेंशन कर रहे थे, वी आर नॉट इन ए जज और बैलेंस दैट कि हमें नफा है नुकसान है. वी ऑलवेज गो फॉर दैट टू पाकिस्तान. एंड जैसे कहा है कि अगर आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है वहां परेशानी हो जाती है. मैं अगेन रिपीट करूंगा पार्टिसिपेंट के लिए कि योर मनी इन योर बैंक, यू विल नो योर बैलेंस इन योर स्मार्टफोन. मींस आप जमा करेंगे, आप आपके हाथ में फोन है, आपको पता है कि क्या बैलेंस है आपका. ऐसे तो आप
नहीं आप जाएंगे अपने कंप्यूटर पर खोलेंगे या आपका स्टेटमेंट देखेंगे, आपके सारे ट्रांजैक्शन उसमें है। दूसरी बात, यू कैन ओपन अ बैंक अकाउंट इन पाक रुपी एंड एनी करेंसी। आई एम रिपीटिंग फॉर ऑल दिस फॉर पार्टिसिपेंट। You can invest in deposit certificate where it will fetch good profit and return. Otherwise, your fund will be idle sitting in the bank. True. इससे अच्छा प्रॉफिट कहीं नहीं मिलेगा आपको। और अब तो इरफान साहब ने एक्सप्लेन कर दिया कि डबल एच भी है, कोलैटरल पे एक्सेप्ट कर लेते हैं हम इसको। तो ये लोगों को नहीं पता था कि कोलैटरल पे हम काम कर सकते हैं। आप जमा करें, यू हैव अ प्रॉफिटेबिलिटी 9.5 से 11%। इन्वेस्ट करें, आपकी प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट होगी और यहाँ से भी पैसा आएगा। And you can assess each transaction there and immediately you have the confirmation there. नहीं तो आप सोचते रहते यार पता नहीं क्रेडिट हुआ है नहीं हुआ, पैसा गया है नहीं गया। और and your bank account will always be active and will not be blocked, and the account holder will not be required to visit the bank to activate. This is the most important point. So really it is a great thing, and I'm sure this will be having more heights. To close this, I have few closing remarks before I give it to Imtiaz Saab and Dr. Murtaza Saab for the closing remark. Number one is I will introduce Abu Dhabi global market here. I will suggest from your people to contact Abu Dhabi global market. It's one of the growing organization. This is open and is progressing very fast, and I will request look into the activities. All international companies are rushing to Abu Dhabi global market in thousands. So I'm giving this news since I'm sitting in Abu Dhabi. Second, the DIFC, of course, is always famous. They have Masdar here, which is the alternate energy thing. You can always tap them and see what are the alternatives they are producing here. And with 100% ownership, this area is going to be different. We would like to invite you on that account when I will conduct the 100 ownership with the government of United Arab Emirates. So I would like if you can join and listen how things will be. It will be advantage for the Pakistan investor to work in both location, and it's one of the best location. The hurdle of 51.49 is over. With that, again, I thank you for all the time and honor. The question mostly have been answered. One of the questions from Meezan Bank addressed, what is the procedure for encashment of NPC as there is no information available with bank official? I think it's very easy. They can instruct and get the certificate liquidated, isn't it? That's my answer. Irfan Sahab? जी, I think like you said, it is very easy. अगर आप long term के लिए इसमें investment कर रहे हैं, so maybe I would like the State Bank colleagues to answer that, but my own understanding is that कि अगर आप long term के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल आपने 5 साल के लिए किए हैं, and if you want to premature encash it, there is a very easy mechanism doing it. अगर आप सिर्फ 3 महीने के लिए कर रहे हैं, तो I really don't know, maybe Arshad Bhatti Saab can answer that, but the answer is that yes, it is easily encashable. और जिस बैंक के थ्रू भी आप काम कर रहे हैं, वो बैंक would facilitate you in doing that. तो अर्शद भट्टी साहब, अगर आप भी कुछ प्लीज इस पे बता पाएं। जी, थैंक यू इरफान साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। जो एनकैशमेंट ऑफ एनपीसीज है, दैट इज ऑन T+1 बेसिस। आज अगर मैं रिक्वेस्ट लॉन्च करता हूं तो कल फंड्स बैंक के मेरे अकाउंट में वापस पहुंच जाने चाहिए, अगर प्री मेच्योर एनकैशमेंट भी है तो भी, दोनों सूरतों में। और अगर मेच्योरिटी है तो मेच्योरिटी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। Another question is a very simple question. I think they can, he said, thanks. Last question, I have multiple currency account under RDA. Will I have to fill multiple account opening form? Is that right? दो सवाल हैं जो बनते हैं। एक क्या, I will request Arshad Saab, can they open joint account in this Roshan bank account? Can anybody can open joint account? जी डॉक्टर साहब, joint account can be opened. Non-resident Pakistani can open a joint account with a non-resident Pakistani as well as with a resident Pakistani. मसलन अगर उनके spouse पाकिस्तान में और वो खुद बाहर काम कर रहे हैं, तो they can open an account jointly with their spouse also. A person can open more than one foreign currency account. अगर मैं US डॉलर में खोलना चाह रहा हूँ और साथ ही साथ मैं पाउंड स्टर्लिंग में भी खोलना चाह रहा हूँ, तो उसकी इजाज़त है रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से भी। और जो बैंक्स मल्टीपल करेंसीज की ऑप्शन दे रहे हैं, वो बैंक्स वो अकाउंट खोलते हैं।
इंसाफ का सवाल ये है कि क्या मेरी एक ही केवाईसी काफ़ी होगी? तो हो सकता है बैंक्स एक ही केवाईसी पे खोल दें, हो सकता है बैंक्स उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि आप थोड़ी सी मजीद इन्फॉर्मेशन दें कि आपको सेकंड करेंसी की रिक्वायरमेंट क्यों है। बाज़ औक़ात आपकी नीड असेस करने के लिए बैंक्स वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो इसलिए वो ज़रूरी होता है। बाकी पाकिस्तानी रुपये का अकाउंट और फॉरेन करेंसी का अकाउंट अगर मैं दोनों रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत खोलता हूँ तो उनका आपस में लिंकेज ऑब्वियसली होगा, क्योंकि दोनों अकाउंट्स मेरे हैं एंड आई कैन लिंक दीज बोथ। और मैं अगर पीकेआर से ट्रांजैक्शन आरडीए में शिफ्ट करना चाहता हूँ कोई फंड्स या फॉरेन करेंसी में, या फॉरेन करेंसी अकाउंट से मैं अपने पीकेआर आरडीए में शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो दोनों पॉसिबल हैं, बैंक से ऑफर कर रहे हैं। Comfortable situation maybe depend upon the banking, each bank procedure system, because फॉर्म अगर आप खोल रहे हैं से नॉर्मली ऐसा भी होता है, जैसे मैंने अकाउंट खोला हुआ है यहाँ एक बैंक में, उसमें हमने डॉलर भी अकाउंट खोला हुआ है, हमने पाउंड भी खोला हुआ है, हमने यूरो भी खोला हुआ है, तो सारे अकाउंट खुल गए उसमें, तो हमारे पास स्टेटमेंट आ जाता है उसी में सारे अकाउंट का। तो ऐसा कैसे मुमकिन है वहाँ इसमें? I would request one of my honorable colleagues if they can answer, because एक specific मेरा perspective ये है कि कस्टमर ने अगर अपनी प्रोफाइल दे दी है तो बैंक कैन ओपन द अकाउंट्स इन मल्टीपल करेंसीज आल्सो, बट स्पेसिफिकली प्रोसेस लेवल पे बैक एंड पे बैंक क्या कोई नई इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो ऑर्गेनाइजर साहब इफ यू आई वुड एको जी जो अर्शद भट्टी साहब कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि देखिए केवाईसी बाय डेफिनेशन इज नो योर क्लाइंट, नॉट नो योर अकाउंट या नो योर प्रोडक्ट। तो एक दफा एक क्लाइंट की, जैसे वैसे अर्शद भट्टी साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि क्लाइंट की प्रोफाइल आ गई है, उसके साथ हम डिफरेंट जो लिंकेजेस हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं और कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक उसमें कोई इशू है सर। अगर कोई स्पेसिफिक कोई कहीं प्रॉब्लम या कोई आया है तो वो हम उसमें देख लेते हैं, बट ऑन इन प्रिंसिपल बेसिस आई सी वन अकाउंट एंड वन केवाईसी बीइंग डन, वन क्लाइंट फॉर्म, और उसमें हम डिफरेंट अकाउंट्स उसमें ला दें। Right answer. This is what I understand everywhere. I have one specific question. Somebody has opened a bank account in Samba at the end of September. I was only given the account number. The whole process happened, but I have not been given ATM card or checkbook or any other material. First, I will ask to deposit 10,000 charges. Then you will be given ATM card. Then I was asked to deposit 11,000. So it seems to be that the process of ATM card, process of the checkbook, that is the question here for Samba Bank. If Samba Bank, आप अगर आप शायद साहब आप बताएं इसको किस तरह, how you handle that? जी मुझे ये स्पेसिफिक भेज दें तो आई विल लुक इनटू इट एज ऑफ इस तरह से तो मुझे नहीं अंदाजा कि व्हाई दिस प्रॉब्लम इज देयर। नो मैं खाली पूछ रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए जी, आप मुझे ईमेल कर दें, वी विल इंशाल्लाह लुक। आई सेंड इट। इन बैंक अकाउंट में चेकबुक भी होगी, एटीएम कार्ड भी इशू कर देंगे, ऑफ कोर्स उसके चार्जेस होंगे। मैं आपको एक सवाल भेज दूंगा आपको। Again, I'm thanking again everyone for participating and giving time. Pakistan Business Council is really honored, and on behalf of all the Overseas Pakistani, I thank you all for providing these services. I'm giving back to Dr. Saab. Another question? We'll send it by email. It's already exceeded time. Okay, I will give it to Dr. Murtaza Saab for his comment, for closing remark. Dr. Kaisar, thank you so much again to the Pakistan Business Professional Council of the UAE, the Embassy of Pakistan, the bank CEOs who made time to be with us today, और वो सब लोग जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया इस वेबिनार में, उन सब का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना वक्त निकाला इसके लिए। मेरे बस ये दो मैसेजेस हैं आई थिंक इन क्लोजिंग। एक तो ये है कि ये जो हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया है ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, तो ओवरसीज पाकिस्तानी इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, अपनी फैमिलीज को बताएंगे, उतना ज़्यादा मेरा ख्याल है इसमें और टेकअप होगा। अभी जो मैंने आपको नंबर्स दिए थे वो टेकअप अच्छा हो रहा है, मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, लेकिन इस तरह की नई चीज़ों में हमेशा ये होता है कि इसको प्रमोट करने का, इसकी अवेयरनेस बड़ा ज़रूरी होता है कि इस तरह की इंटरेक्शंस हों, और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आगे जाके और भी इंटरेक्शन इस तरह के हों। दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि कुछ सवालात आपने किए थे डॉक्टर कैसर साहब, जो आपको मिले थे, कुछ लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है अभी भी अकाउंट्स खोलने में,
तो प्लीज़ आप हमें भी ईमेल कर सकते हैं rda@sbp.org.pk पे, या अपने बैंक्स को भी आप कर सकते हैं। और हम एक कांस्टेंट इंटरेक्शन हम और हमारे जो पार्टनर बैंक्स हैं वो रखते हैं। जिस तरह औरंगजेब साहब ने बताया था, गवर्नर साहब भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और हम चाह रहे हैं कि ये जो नया चैनल हमने शुरू किया है ये ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो। और ये तब भी होगा जब हमें पता चलेगा अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम्स हो रही है या उनके कोई अगर फीडबैक है हमारे लिए, तो इस इनिशिएटिव को हम और भी बेहतर करना चाहेंगे। इंशाल्लाह ये हम चाहते हैं कि चैनल एक लॉन्ग टर्म चैनल हो, जैसे मेरे बाकी कोलीग्स ने कहा था, बैंक सीईओज ने, बैंक के प्रेसिडेंट्स ने। हम चाह रहे हैं कि ये एक नया चैनल जो हमने खोला है ये आगे जाके और भी लोग इस्तेमाल करें इसको ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, और ये उनको एक किस्म की हमारी तरफ से it's a way of thanking them for having always stood by Pakistan during times of need, including during COVID. आपको पता है कि remittances हमारी बड़ी strong हुई हैं during the COVID months. Overseas Pakistanis हैं, वो हमेशा पाकिस्तान की मदद करते हैं। तो इस दफ़ा हम चाह रहे थे कि हम भी उनकी नीड्स को मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसा चैनल खोलें तो जो उनकी जो बैंकिंग नीड्स हैं, इन्वेस्टमेंट नीड्स हैं, वो पाकिस्तान में पूरी हो जाए। तो with that, Dr. Kaisar, I'd like to thank you again and all the participants and the Embassy of Pakistan as well in the UAE. Thank you, Dr. Saab. Any CEO, President CEO, any have any comments? They can address that. Anyone has any comment? Any of the President and CEO, any have any comment? Okay. Thank you so much. Okay, I will pass it to for the closing remark again to Mr. Imtiaz Saab. Imtiaz Saab. जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद साहब, अरशाद भट्टी साहब और ऑनरेबल पैनलिस्ट बैंक्स के सीईओज एंड प्रेसिडेंट्स, आप सबकी आज यहाँ पे प्रेजेंस ये शो करती है कि इस इनिशिएटिव और इस चैनल के पीछे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप और तमाम बैंक्स की लीडरशिप इज़ पर्सनली स्टैंडिंग बिहाइंड दिस इनिशिएटिव। पाकिस्तान कम्युनिटी को और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को डेफिनेटली एक बहुत कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट मिलेगा आप लोगों की प्रेजेंस से। आपके यहाँ होने से जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं, आपके जो बाकी लोग हैं जो बड़े कमिटेड हैं, ऑफ कोर्स ब्रांचेस में बैठ के जहाँ पे एक्चुअली लोगों को इंटरेक्ट करते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि एक रोशन डिजिटल अकाउंट एक ऐसा चैनल और ऐसे इनिशिएटिव है जिसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लीडरशिप और इसी तरह बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक्स की लीडरशिप भी इज स्टैंडिंग। So I thank all of you for being available today to our Pakistan expert Pakistanis. Inshallah, future में भी we will keep bothering you. जहाँ पे भी हमें कम्युनिटी की तरफ से जो भी फीडबैक मिलेगी और जो भी क्वेश्चंस होंगे हम आप लोगों को भेजते भी रहेंगे, और जब इंशाल्लाह जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे कि दोबारा सबके साथ एक इंटरेक्शन हो सके। और इस जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे कम्युनिटी एट लार्ज बहुत खुश है। हमारे पास एम्बेसी में जितने लोग आते हैं और जितने लोगों से इंटरेक्शन यहाँ पे होती है, दे ऑल अप्रिशिएट कि स्टेट बैंक का ये जो इनिशिएटिव है इसने ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए बैंकिंग को बहुत इजी बना दिया है। दे फील कनेक्टेड, दे फील दे कैन send not only just transfer the money, but they can also participate in the economic activity. So on my own behalf and the Embassy of Pakistan, Pakistan Business Council and Pakistani community in UAE, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। Inshallah, we are looking forward for more fruitful interaction and to make this initiative successful. Thank you very much. Thank you, Imtiaz Saab. I must add to Imtiaz Saab, we commend our community living in United Arab Emirates, nearly 1.7 million people living, and Embassy and the Council Dubai are playing an extraordinary role. Their system procedure is excellent. They do a very fast work there, and we are very happy and we appreciate whole team member of Pakistan Embassy and home team member of Consulate Office in Dubai. They're doing great job. Pakistan Business Council again thank all the President and CEO, Dr. Murtaza Saab, Imtiaz Saab, and also if you need anything, Pakistan Business Council has an international desk or Pakistan desk. You just put the question, we will answer to you and respond to it for this region. We are very well connected with all the ministries here, either federal or local ministries. So you can have an immediate answer and immediate contact to their top bosses over there.
Thank you so much, and I have my best wishes for all this, and I thank the participants who have made this show great. Thank you, my participants, and thank you, my board members. We are very thankful for your hard work, especially my VP program, Mr. Iqbal Naseem, who has organized this program. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much, Ji. Thank you. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, Ji. Thank you, Ji. Khuda Hafiz. Thank you so much. Shukriya ji, Salaam. Khuda Have a Hafiz. great evening. And visit United Arab Emirates after COVID. Absolutely. Thank you so much, Doctor. Khuda Hafiz. Thank you ji, Khuda Hafiz. Thank you, Shukriya. Thank you, sir.